Sometimes people, when they go through my register and on the front page, when they find this case study, they think, oh, could be sir is having some suicidal thoughts. He wants to commit suicide, but it's not like that. This is the greatest learning lesson. How even if we are successful, we could be unhappy. We could feel suicidal, and the only reason is there is a strain of flaw in our personality. कि हमारी personality में कुछ issues हैं which we are not able to manage. And that is why we every second or third day we find a news item, somebody committed suicide in Kota, somebody committed suicide because of family pressure, somebody committed for XYZ reasons. That means people are not able to manage their emotions, right? So let's see. Uh, Let me read a bit so that you understand the story and then we'll proceed further. बिहार के बक्सर जिले के कलेक्टर 30 वर्षीय मुकेश पांडे ने गुरुवार खुदकुशी से पहले मोबाइल में वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने घरेलू झगड़े के कारण जिंदगी खत्म करने की बात कही। 2012 के आईएएस मुकेश पांडे ने गुरुवार रात दिल्ली में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। वो बिहार के सारण जिले के रहने वाले थे। उन्होंने वीडियो में क्या कहा है, लेट लिसन दैट, ओके। सो ही सेड, ओके, जस्ट लेट मी एडजस्ट द कैमरा। मेरा नाम मुकेश पांडे है। 2012 ऑफिसर हूँ, बिहार कैडर का। घर गुवाहाटी में है। पिताजी का नाम सुदेश्वर ने, तो ये मेरी मौत की बात का है। मैं बक्सर के लिया, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पैराग्राफ। ही वाज एन right? These two things. Just please write a short message. Okay. So, our one exam. There is nothing
Okay, thank you. Uh, there are a lot of connectivity issues today. So I'm getting disconnected again and again. But anyway, we'll try to manage it if possible. And can you please send me a message in chat box? My screen is visible to you or not, or am I audible to you or not? Please just send me a message so that I'm sure things are working fine. एक आदमी nothing is beyond him. He manages the whole city. That means he cracked India's #1 exam पूरे हिंदुस्तान से 600 या 700 लोग सेलेक्ट होते हैं उनमें से कुछ लोग आईएएस कुछ इंडियन द प्योर आईएएस है ना जो प्योर आईएएस होते हैं वो नॉर्मली कलेक्टर के लिए अपॉइंट होते हैं Shubham is saying there's a glitch in voice. Chirag is not getting my voice. I don't know what is wrong today, but am I audible now? Can you please? Yes, Anukriti, unmute yourself, please. Adrika, can you unmute yourself, please? Yes, sir. Am I audible, beta? Yes, sir. आ रही है पर थोड़ी सी ग्लिचेस हैं. ब्रेक हो रहा है? Yes, sir. थोड़ा सा. थोड़ा ब्रेक हो रहा है. Okay, let's see. I'll try to be closer to the laptop in case the issues with laptop. So he was selected in IAS, means as I earlier said, you are at the top of the world, right? Now there are two things we have to clearly understand. One is academic intelligence. आप यदि IAS क्रैक कर रहे हैं इसका मतलब you are academically too good. आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से वो चुनिंदा 300 या 400 लोगों में से हैं जो प्योर आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं and you have become collector of a town. That shows you are extraordinary because students from all streams come. आईएएस के एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि केवल कॉमर्स वाला दे सकता है आर्ट्स का दे सकता है anybody and everybody who's a graduate can go for an IAS exam, right? So you fought with IITians, you fought with science graduates, you fought with commerce, arts graduates, doctors, everybody goes for it, right? And you are the cream of the society. And then there's a problem in your family. Now you see the funny part of it. Somebody who is managing the whole city, you are the collector. You have a lot of political pressure. CM, ministers, MLA, सब ये करना है वो करो हमारे एरिया में ऐसे होना चाहिए. Police, you have to look after the day-to-day administration. There are strikes. There is unrest in the society. You are managing everything, right? And then there is one issue in your personal life. See, you are able to fight with 100 things in your life, but then there is one thing in your life and which you are not able to cope up. And here is the role of personality. Like if I talk about AIMS, All India Institute of Medical Science, that is India's toughest exam. NEET में बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन्स होते हैं और जो बच्चे क्रीम होते हैं उनका एम्स में सिलेक्शन होता है. So I have been selected in AIMS and I'm undergoing the course.
There was one girl in Ames, Jodhpur. She committed suicide, and she wrote in her suicide note that my friend is not speaking to me for a week, so I'm committing suicide. Now, it is so strange. Somebody who was able to crack India's number one exam, who is the best, who has been, you know, who has, materialized his or her own dream. जो हिंदुस्तान के लाखों लोग सपना देखते हैं, वो आपका सपना पूरा हो गया है. And you are committing suicide for a very small reason. Okay. If she is not speaking, that means she is not worth of your friendship. है ना? आपको मैं उसकी जगह होता तो मैं सोचता कि oh, she doesn't deserve me. I'm so good. I need better people in my life. Right? Number one. Number two, that's how you deal with your emotions. When I graduated and I started after CA, I started trying for different jobs. So if I was not selected at some place, I will counsel myself. Probably they lost a good candidate. उन्होंने एक अच्छा employee खो दिया by not choosing me. So we should know how to manage our own emotions. And if we are not able to our emotions, then such drastic things happen in life, right? इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं ताकि एक better understanding create हो concept को लेके. Then he writes, जीवन से खुश नहीं हूँ, मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है, इससे जीना दुश्वार हो गया है. दोनों की गलती नहीं है, दोनों मुझसे प्रेम करते हैं. कभी कभी किसी चीज की अति एक आदमी को मजबूर कर देती है कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठा ले. मेरी एक छोटी बच्ची भी है, मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है. He knows both of them loves him. He has a kid, that means he has a responsibility. और फिर आप कह रहे हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है. आपको क्या लगता है, क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था? लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं. हमारे पास हमेशा ऑप्शंस नहीं होते ही होते हैं. और यदि ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरों से बात कीजिए, शायद वो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बता देंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं या आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं. Life always has numerous possibilities. Life is full of possibilities. Believe me, I have seen thousands of failures, and then I have seen success beyond those failures. तो कभी ये नहीं सोच सकते हम कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है. This is sheer stupidity. Somebody who is an IAS officer, who is helping out everyone, right? Who is so intelligent, and he is saying there was no option. I don't believe that, right? मैं सिंपल और पीस लिविंग आदमी हूँ. जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत ही उथल पुथल चल रही है. हमेशा हम लोग किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हैं. दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग अलग है. चॉक एंड चीज हैं हम लोग. वो बहुत ही एग्रेसिव और एक्सट्रोवर्ट है, और मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है. किसी भी चीज में हमारा मेल नहीं खाता है. बावजूद हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. और ये जो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ. मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है. बेसिकली मैं खुद ही जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ. मुझे नहीं लगता. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. Just a moment, let me have some seconds first. Okay. देखिए यहाँ पे पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है. एक आदमी का पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. ही इज वेरी इंट्रोवर्ट. ही इज मोर टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ लाइफ. वो हर चीजों का इंटेलेक्चुअल साइड देखता है ना. उसे हर चीज का रीजन समझने का एक उसका जो मेंटल प्रोसेस है, वो हर चीज का रीजन समझने की कोशिश करता है. दूसरी तरफ उसकी वाइफ है, शी इज वेरी इम्पल्सिव. शी immediately blurts on any issue. So they are two polar opposite personalities. दो पर्सनालिटीज हैं जो दोनों बिल्कुल अलग अलग, राइट? एक इशू तो ये हुआ,
और दूसरा उसकी मदर का और उसकी वाइफ का इशू. There is a triangle in the family. Now see how he analyzes the things. मुझे नहीं लगता कि हम ह्यूमंस को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हम अपने आप को ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं. हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. जब आप यूनिवर्स में खुद को इमेजिन कीजिएगा और जो यूनिवर्स की जर्नी रही है उसमें कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, तो पता चलेगा कि हमारा जो अस्तित्व है उसका कोई मतलब नहीं है. हम नए नए जाल रोज बुनते रहते हैं और अपने आप को उलझाते रहते हैं, वरना हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. मुझे ये बात अंदर से रियलाइज हुई. पहले मैं सोच रहा था कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मूव करूंगा, फिर कहीं जाकर तप करूंगा, पर बाद में लगा कि यह भी व्यर्थ की चीज है. मैं एक्सट्रीम स्टेप ले रहा हूँ, ये कॉवर्डली स्टेप है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं बची है जीने की, तो फिर एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. जिसे भी ये वीडियो मिलता है वह मेरे परिवार को भी कॉल कर बता दीजिएगा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा. मैंने यही प्लान बनाया है कि झूठ बोल के दिल्ली जाऊंगा और सुसाइड कर लूंगा. Now I totally disagree what he has written in column number 5 कि यूनिवर्स में हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है. I don't agree to that idea. We have a lot of importance in this universe. हो सकता है कि हम स्पेस से देखें तो एक डॉट से ज्यादा मेरा एग्जिस्टेंस नहीं हो, but that dot can make hell amount of difference. Why we are living in this world? Because there were people in the history who made difference in this universe. आज आप और मैं कंप्यूटर पे लाइव क्लास कर रहे हैं. यदि कुछ लोगों ने फर्क पैदा नहीं किया होता तो ये कंप्यूटर नहीं होता, ये नेटवर्क नहीं होता, और आज जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड कर रहे हैं, that we would not have had. So yes, people have made the difference in universe. Yes, we are here for a short time. That's what we have to accept. We are here for 50, 60, 70 years. And in those couple of years, we have to make a difference. So that's a negative thought process. कि हम लोग आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे और हमारा कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है, रोज रोज इन चीजों में क्यों फंसे रहे. नो, ट्राई टू मेक अ डिफरेंस. ही कुड बिकम ए कलेक्टर, you know, an exemplary collector for which people could quote examples that there was a man who made a difference wherever he worked, how he contributed to people's problems by sorting them out, how he made the administration better, how he brought the changes in everybody's life. He could make a lot of difference. See, whatever is your role, can you play your damn role? That is very, very important. I'm here for 30, 40 years. Can I make a difference in 40 years? Steve Jobs, he told to his engineers, I want a phone with single touch button. And his all engineers said, he has gone mad. He was an extraordinary human being, but he was a very difficult boss. He was a very bad boss. He called up all top engineers, I want a phone with a single button. And that was the era when everybody was introducing more and more buttons on the phone. He just said opposite, I want a single button. And they said, oh my God, he has gone mad. But after 15, they pondered over 15, 30 days. And then engineers came back and they said, sir, it is possible if we use the touch screen. If the screen becomes touch, this is all possible. See, so we can contribute. Who says we cannot contribute? Whatever is my role. इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी मेरी पोस्ट होती है, I don't put any political post because I cannot make a difference in politics. I'm not part of it. I don't put anything religious. मैं कभी religious post नहीं डालता. Religion is a personal thing. What I believe, what is my faith, whatever I do it for myself. So it's not a public thing. I believe, I don't believe, that is my choice. It's not your choice. So why should talk about it? Do we talk which soap we use in our toilet, in our bathroom, in our washroom? No, we don't. It's a personal thing. So religion is a personal thing, right? So I'm a teacher. So I should play my role in excellent manner. That is how we can make the difference. Every ripple make the difference. Every wave makes the difference.
आपने देखा है पानी में एक वेव आती, उसका बहुत दूर तक इम्पैक्ट जाता है। तो जो लोग काम करते हैं उनसे दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और फिर वो और बेहतर काम करते हैं। दिस हाउ वी कैन मेक द डिफरेंस। Had I been, had I been at his place, I would have dealt this problem differently. If my wife and my mom, they are not at good terms, I can live separately, and my parents can live separately, and I'll make sure that they are taken care of very, very nicely. Every day I'll talk to my parents. Every day I'll take care of their medical needs, personal needs. I'll keep on visiting with my kids, with my wife, and I can have two families. Why I want to stay in one family and every day we are fighting? So there is an option. There is a solution, man. Now, so this was the first case. I'll take one or two more such cases so that you have a better understanding. So let's understand these two are different things: intelligence and emotions. Academics and emotions, skill and emotions, these two are different things. If somebody is very, very intelligent, that does not guarantee that he is emotionally intelligent also, right? So that's how things happen, right? So our today's session is personality development. What is personality development? Why we should go for to develop our personality, how we can develop our personality. और कई बार तो कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना ज़्यादा सुन लिया ये वर्ड कि इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, कि कहानी खत्म हो यार, एक बार डेवलप हो जाए। बट इट्स नॉट इंजेक्टेबल, इट्स a lifelong process. It's a lifelong. I'm still reading. Warren Buffett at the age of 90 also he's reading 6 hours a day. So it's a lifelong learning process if you really want to develop your personality. So let's see the different dimensions of personality now. What are the different dimensions, right? Uh, so see, the term itself is very, very clear. Personality. So this comes to you. कि what are the core characteristics of you, है ना, कि आपका कोर क्या है, आपका कोर आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं ये वाला इशू ले लेता हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनल इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द राइट वर्ड। फिर मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा कोई चीज नहीं होती। हम बिल्ड एरिया को डेवलप करते हैं, रोड्स को डेवलप करते हैं, है ना, दैट इज द डेवलपमेंट एरिया। इट इज पर्सनल इफेक्टिवनेस, कि हम क्या करें और कैसे करें कि हम लाइफ में ज्यादा इफेक्टिव। सो दिस इज related to personal effectiveness. This is not personality development. I should call it a personal effectiveness program, PEP, right? तो पहले हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि पर्सनालिटी वर्ड को ही डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली जो पहले, यदि मैं 1970 की बात करूं या 1950 की बात करूं, तो पर्सनालिटी क्या था और आज की डेट में पर्सनालिटी क्या है। देखिए पहले जो भी टॉल होता था वो सारे मॉडलिंग असाइनमेंट में आता था, जो भी गुड लुकिंग होता था, जो फेयर स्किन्ड होता था, वो उन सबको मॉडलिंग का ज्यादा असाइनमेंट मिलते थे और उसको हम कहते थे ओ व्हाट अ पर्सनालिटी, ही सो टॉल, ओ ही सो हैंडसम, ओ ही सो गुड लुकिंग, राइट? दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू कॉल पर्सनालिटी। बट वो हम कहते हैं फेशियल ईरा, है ना। और उस फेशियल ईरा में क्या हुआ कि आप दिखते कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 1960, 1970, 1980s, इन दैट ईरा आई कॉल इट द ईरा ऑफ गॉड फैक्टर, कि ऊपर वाले ने आपको कितना अच्छा बनाया, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं था, है ना? आपको कोई रोल नहीं था उसमें, केवल ऊपर वाले ने आपको, he made you tall, he made you handsome or beautiful, good looking, and your figure is good, so you became a personality, right? So it was not your role actually. तो फेशियल ईरा था कि आप दिखते कैसे। अब उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से। अब पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है कि आपके अंदर वर्च्यूज क्या है, वी कॉल इट वर्चुअल ईरा। आपकी पर्सनालिटी में क्या क्वालिटीज हैं। आप छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब इम्पैक्ट ये है
what is your quality system, what are the characteristics of your personality. So whole thing is coming to your virtues. अब इतना सा रह गया है कि यदि मैं वापस फेशियल इरा पे आऊं कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर हो, प्रॉपर हेयर कट हो, and you should look presentable because you cannot change your shape, size, height, you cannot change it. So since we cannot change it, it's a god factor. Let's not focus much on it. Let's just make ourselves presentable. But then what is more important? The more important is honing, working on certain qualities. We should learn, we should develop certain qualities. Then you will be a true personality. फिर हम कहेंगे कि इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है. आज हो सकता है सचिन तेंदुलकर का आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसा हो, है ना, his voice doesn't sound like a male voice, but he's so popular. He's not popular because his face is good or his voice is different. He's popular because he did wonders in his game. He was too good in his game. Or we talk about Virat Kohli. He's too good in his game. That is why people love him, and that is why he gets so many advertisements. He gets so much income. Instagram पे यदि विराट कोहली का एक पोस्ट है तो bloody he's going to get 1.5 crore for each post, and people keep on liking and he keep on making money, right? So world is ready to reward the people with virtues, with qualities. ठीक है, तो हम लोग वर्चुअल एरा में हैं जहां पे कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है, राइट. इसके मैंने दो पार्ट किए हैं. फर्स्ट पार्ट इज स्किल पार्ट. एक तो आपके अंदर स्किल हो, जैसे लेट मी टेक द very very popular example of Michael Jackson, which we all are aware of. Michael Jackson was bankrupt at the end of his life. He had more expenses than his incomes. So it was really being difficult to pay off to afford his day-to-day life. And that is why he planned the last tour, and he died just before the last world tour, right? So the first thing in any skilled person is he or she has to be skilled. Sorry. So he was skilled, no doubt about it. He was proficient. Then he kept on creating the new music. So the point number 3, he kept on learning, unlearning, and relearning about music. But then he missed out on 2 things. He was not disciplined. He was not result oriented. These are the 4 things required in a skilled person, in a professional person. एक बार मैं एक मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था. डब्बू रत्नानी, शायद आपने नाम सुना हो, एक बॉलीवुड के बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है. एंड अमिताभ बच्चन वाज शूटिंग इन नासिक और समवेयर close to Mumbai, and Dabbu Ratnani approached Amitabh Bachchan. He said, I haven't clicked your photographs since long. Can we have a schedule tomorrow morning? Amitabh said, I am quite busy in the hours. I have my shooting schedule. But yes, I am available at 5 o'clock in the morning. Now you see, such a huge star. And he agrees to a photographer. Okay, you come and click some photographs for me at 5 in the morning. So Dabbu was happy, at least I got his appointment, I'll reach at 5 o'clock in the morning. And then he thought of, he's such a big star, he will be working till late night because Amitabh writes his blog and Insta post till 1 o'clock, till 2 o'clock. So he thought it won't be possible for him to get up at 5 and to come for the photo shoot, but still I'll try to reach around 5:10, 5:15 I'll reach. Anyway, so he reached in the hotel at 5:10, 5:15, and at reception he asked, can you make a call to Mr. Amitabh's room? I would like to have a word with him. I have an appointment.
or can you connect me with his personal assistant because we have a photo scheduled today morning. And the receptionist said, no, I can't call him. He's just sitting opposite to you. Amitabh was waiting sharp at 5 o'clock for the Buratnam. See the discipline in his life. And that is why at the age of 77, 78, he is still in demand. He is shooting till 8 o'clock, 9 o'clock. There are so many professionals in our film industry, but there are hardly few people who are as disciplined as Amitabh Bachchan. He is proficient in his art. उसको अपना आर्ट बहुत अच्छे से आता है. He knows acting. He knows dialogue delivery. His dialogue delivery is extremely good. क्योंकि उन्होंने अपने फादर की सारी हिंदी की बुक्स पढ़ी. उनका हिंदी और उर्दू पर इतना अच्छा कमांड है जो शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों का. What I'm trying to say is, whatever you do, you have to be excellent in that. If you are excellent, nobody can stop you. If you are an average, be ready to lead an average life. इस साइकिल को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ. औसत प्रयास, औसत परिणाम, औसत जीवन. यदि आपने अपनी जिंदगी में औसत प्रयास किए हैं तो औसत परिणाम आएंगे और फिर आपका जीवन भी, you should be happy with your average life. If you can't put that much effort, if you cannot excel in your area of profession or area of choice, if you are not disciplined, if you don't want to learn new things and forget the old things, and if you are not result oriented, you have to be. You cannot date. You cannot take your profession for the fun sake. कि मेरे को करने में मजा आता है. आपको मजा तो आता है ये काम करने में, बट उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना कुछ. एंड यू नो दिस कौन बनेगा करोड़पति, आपको लगता है कि टीवी पर अमिताभ कैसे आए? दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. He started Amitabh Bachchan Corporation Limited, ABCL Corp, and he failed hugely. उन्होंने मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया, कुछ मूवीज बनाई अमिताभ बच्चन ने, एंड एवरीथिंग फ्लॉप्ड. And he was in a financial mess. He was not able to pay his loans. तो उन्होंने अपने पड़ोसी को कहा, यश चोपड़ा साहब उनके पड़ोसी हैं, कि सर मैंने मेरी सारी कार सेल कर दी, 2-3 कार से ना मेरे यहाँ पार्क कर दिया करो ताकि लोगों को लगे कि yes, I am still rich. That was the stage when somebody approached Amitabh Bachchan, can you do a TV serial, sir? Most of the film stars, they don't do TV serials. Amitabh said, I'll do it. He needed money. He reinvented himself. And from that day onwards, he is doing everything. You name it, advertisement, TV serials, blogs, films, documentaries, government ads, you name it and he does it. There is no limit. Right? So he kept on learning, unlearning, relearning. You have to build a skill. देखिए, एक होता है कि कोई काम पैशन के लिए करते हैं और एक होता है कि हम पेट के लिए करते हैं. हमको दोनों के लिए काम करना होता है कि हम जिससे खुश होते हैं वो भी करें, और टू लीड अ गुड क्वालिटी लाइफ वी हैव टू मेक मनी, एंड फॉर दैट वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर एक्सीलेंस. वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ क्वालिटेटिव प्रोफेशनल. आप आज किसी को भी, सपोज विराट कोहली को पसंद करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि ही इज गुड लुकिंग, because his game is good. You appreciate his quality. And that's what I'm trying to say. कि हम धीरे धीरे वर्चुअल पे आ रहे हैं कि उस आदमी की क्वालिटीज क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है. नेहा कक्कड़, you know, she's short. She's not all that great looking also, but still we love her because of her voice. So people will hook to you only and only if you are skilled, if you are excellent in your job. You can deliver results. You can keep on updating yourself with the time. Then only you will be in demand, and then only you will be a personality. People can connect, people can talk, people would love your company, people would love to learn from you. Right? So skill is the first thing. And see, the most surprising thing
If you see the top image, $2.1 billion. माइकल जैक्सन्स अर्निंग सिंस हिज डेथ, यानी कि उसकी मौत के बाद भी उसने दो बिलियन डॉलर्स कमाया। जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, म्यूजिक हैं, उसकी जो रॉयल्टी आती है ना, एंड दैट इनकम इज वर्थ $2 billion. See what is the mockery of life, कि कैसे उसको लाइफ में आप देख रहे हैं, उसके घर पे पूरा जू था, है ना। See the kind of cars he had. He had 20 security guards in a time, and 100 cars or more than that, nobody knows. His own island, he owned an island. So how do you survive with that level of expense? So basically, one area is a skill. He had the skill, but he still failed. So skill, that means a skill is not all that sufficient. आपके पास स्किल होने के बाद भी आप फेल हो सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल. दिस इज अ ग्लोबल एग्जांपल ऑफ फेलियर. हाउ you could be extremely successful, so successful that even after your death you are making money, but still in your personal life you are a huge failure. Your marriage never survived. You were accused for child abuse. You were never happy. You had 30, 40 or more than that surgeries, plastic surgeries on yourself, and you were never happy with yourself, with your life, with your career, though you were an icon, worldwide icon. People used to love you, still you were not happy. Again, I'm coming to the same point. A skill has to be there, but that's not the guarantee of success. Then sometimes what happens? Is that skill real? That is also a question. Sir, I have a skill, but is that skill real or not? This is a Times of India news item. MBAs, BTECs, and likewise 19,000 students are applying for 114 sweeper posts. 19,000 बच्चे 114 स्वीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर. मालूम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्वीपर के लिए? आप इस पैरा को पढ़िए. The third para, which I have underlined with red pen, with no educational qualification is required for the post. अब आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको केवल 114 चाहिए. अब आपको 2 साल तक टेम्परेरी रखा जाएगा. See in the second column, cleaning streets with brooms, maintaining drainage system and municipal sewer lines. यानी कि आपको 2 साल ये सिखाया जाएगा कि साफ सफाई कैसे करना है, नालियां साफ कैसे करनी है, और जो गटर लाइन्स है उनको कैसे क्लीन रखना है. ठीक है. For 2 years you will be a temporary employee, right? And then you will be made permanent. इधर एक साइड में और न्यूज आइटम है कि while in Punjab grads want peons job, और करीब करीब 19 पोस्ट के लिए 8,500 बच्चों ने पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया. So I have done BTech. That's a paper qualification I have, right? I have completed the course. I haven't learned the course. right? कोर्स को कंप्लीट कर लिया है बट सीखा नहीं. This is the problem with most of the graduates, and that is why there was a survey which came out with this report that 85% Indian graduates are not employable. Yes, Triveni sir, unmute yourself. सर कितनी देर चलेगा सर आपका ये? और क्योंकि इसमें से नेक्स्ट क्लास और बैचेस का टेस्ट भी है, एक बैच. अच्छा, आप बताएं कितने बजे इन बच्चों का? बस 12:05 पे टेस्ट भी और फिर दूसरे बैच की नेक्स्ट क्लास है. Okay, so this is 12. So I should finish in next 2 minutes. ये वाला स्लाइड में फिनिश कर देता हूँ. यस सर. ठीक है. Okay, thank you. So basically,
I cannot call them skilled. They just have a degree, a piece of paper. What I personally feel कि यदि B.Tech हूँ मैं, that means I must have studied maths in class 11, 12 and first year, second year, third year, fourth year. After 6 years, solid background of mathematics, if I am not able to get a job, what I can do? I can start something of my own. I won't name them, but in Ajmer, there are 1 or 2 institutions. They have 500, 600 kids. And the guy was not able to crack the PET exam. पहले engineering के लिए entrance exam होता था, pre-engineering test. He was not able to crack that. He started his own coaching. And today, he's making lakhs of rupees. He didn't go for the job. He said, I'll work hard and I'll do something of my own. Why he had guts to start? Because he knew the subject. Though he failed in PET, but he knew the subject, and that is why he was confident. Why these guys are going for sweeper job or peon's job? Because they are not confident about what they have studied. They know we are hollow. हम अंदर से खोखले हैं, हमको कुछ नहीं आता है, हमने कैसे ना कैसे एग्जाम पास कर लिया, and now I need some security in my life. I need some survival. So such a skill, this is not called a skill, this is called a degree. You don't have a skill, man, you just have a degree. And that is why you are not getting a job, you are not getting an opportunity in life. शाम को यदि मैं 2 घंटे आसपास के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाऊँ ना, तो I can get 15 to 20,000 rupees a month just by working 1 or 2 hours a day. And it's a happening country. World is looking at India because we are growing at a phenomenal pace. And we have a population base of 138 crores. So there is a huge market. Let's do something of our own. So this is not called a skill. So we have covered the part 1. Unfortunately, we couldn't cover the whole thing because I wanted to discuss the part 2. These 2 things make the personality. So let me speak with Triveni sir in the next couple of days and we can decide about the second session. I hope you must have learned something out of it. And it's not just listening, try to implement. That is very, very important. Whatever are the takeaways of today's learning, please start implementing that. That is more important. Thank you so much. And see you again in the next class. Thank you so much. Triveni sir. Yes, sir. Will you use the same meeting for this purpose or some other? Yes, yes, sir. Same meetings. Same. You are host now? Yes, sir. So I can leave. Okay. Thank you, sir. BCA first year, BSc first year और MSc connected रहे हैं सारे स्टूडेंट्स. BCA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर और MSc सेम 1 ये कनेक्टेड रहे. इसी मीटिंग में होगी क्लास. सेम मीटिंग्स है. BCA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर और MSc सेम 1 कनेक्टेड रहे हैं तीनों. मीना मैम. यस सर. आप 1 मिनट अनम्यूट कर लो अपने आप को. सर अनम्यूट हूँ मैं. हाँ वो तो ठीक है. नहीं Yes, 1 sir. मिनट. ये लाइव है, इसको लाइव को मैं स्टॉप कर रहा हूँ. या आप ऐसा करो, एक नई मीटिंग बना लो मैम. इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ मैं. BCA फर्स्ट ईयर, BSc MSc नया लिंक आ रहा है, उससे कनेक्ट होना है. मैम मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप न्यू मीटिंग बना लो इसी से. ओके. क्योंकि इसमें और Okay, ये लिंक सबके पास गया